Good evening. As far as Maharashtra is concerned, there are 2,70,000 cooperative housing societies. Various types of cooperative societies are in the Maharashtra, and one is the housing society. 1,25,000 housing societies are in Maharashtra. But most of the problems are in housing society. What is the reason? Why that is problem? See, there are only two reasons. One is the ego, other one is the ignorance. What is the ignorance? See, we all members of the cooperative society, whether it is a managing committee or the other members, they are busy with their profession, service, business. They don't get time to read the Maharashtra Cooperative Society Act 1960 bylaws. Every 2-3 months, government of Maharashtra issues the various circulars which they don't get time to read. And some of the members comes with some problems. How to solve the problem? What is the provision to solve the problems which neither the managing committee members know and other members. So therefore the dispute starts. Therefore in 2011 the central government they amended the constitution, that is called the 97 constitutional amendment. What is the salient feature of the 97 constitutional amendment? Salient feature of the 97 constitutional amendment is formation of the cooperative society is fundamental right of the Indian citizen. That is number one. It is an autonomous institution, democratically controlled, voluntary formation, and one thing which they have mentioned is to provide the education and training to each and every member of the society. Since it is the state subject, the central government directed all states of India to amend their cooperative society acts. Maharashtra government amended Maharashtra Cooperative Society Act and inserted section 24. Section 24A. What section 24 is? To provide education and training to each and every member of the society. Again, there was drastic changes in the Maharashtra Cooperative Society Act 1960, and they made separate chapter for the housing, and they inserted one section, that is section 154B6. That also section says to provide the education and training to each and every member of the society. There was an amendment of the bylaws. Bylaws says to each and every society must collect the fund 10 rupees per flat from the members of the society as an education fund, education and training fund. Where you will utilize that fund? That fund is to be utilized only for education and training. You cannot utilize that fund for the building repairs or the painting of the building. No, it is to be utilized only education and training. Right? Then, see, what is the expectation of our members? The expectation of our members is very simple. Their expectation that all our committee members, they must maintain the transparency. That is a simple expectation. Then, Maharashtra government has made such a provision in act as well as the bylaws. If you read the bylaws number 146, the bylaws number 146 says society must complete their accounts ready within 45 days from end of the year. The year starts from April and end March, 31st March. So within 45 days from end of the year means before 15th May, you must keep your account ready. How you will keep the account ready? What the secretary has to, there is some responsibility of the secretary. First responsibility is that secretary should write a letter to the bank and obtain the accrued interest certificates. That is a mandatory. Secretary has to obtain the accrued interest certificates and balance as on 31st March. That is the first job which secretary has to do. Then, as per section 81 of the Maharashtra Cooperative Society Act says, within 4 months from end of the year, your auditor must sign the audit paper. That is section 81 of the Maharashtra Cooperative Society Act. So, two things are binding. One, audit कौन से भी हालत में आपका जुलाई को ऑडिट होना चाहिए विदिन 4 months फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर मीन्स 35 जुलाई को आपका ऑडिट कौन से भी हालत में होना चाहिए. यू कैन नॉट से नो, कुछ एक्सक्यूज नहीं चलेगा उसके बारे में. ओके, वंस द ऑडिट इज ओवर, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेक्रेटरी टू रीड ईच एंड एवरी सेंटेंस ऑफ द ऑडिट मेमो. काफ़ी टाइम्स ऑडिट मेमो में काफ़ी मिस्टेक्स होती है.
कट एंड पेस्ट, काफ़ी मिस्टेक्स होते हैं, तो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेक्रेटरी टू रीड ईच एंड एवरी सेंटेंस ऑफ द ऑडिट मेमो. Then we should call the managing committee meeting and get it approved. Then what is the next job which the secretary has to do? Next job of the secretary has to do is to prepare audit rectification report in form O. Form O ये always triplicate में आता है. It is a prescribed form. Just you cannot make your own form. Prescribed by the government of Maharashtra. It always comes in the triplicate. सो ऑडिट मेमो में जो कुछ इरेगुलरिटीज है, जो कुछ रिमार्क्स ऑडिटर ने लिखा है, तो वो जो रिमार्क्स है उसको ऑडिट रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट में आपको बनाने का है. नेक्स्ट जॉब इज इफ देयर इज एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, इन शॉर्ट प्रॉफिट, बिकॉज एज पर द हाउसिंग सोसाइटी इज कंसर्न देयर इज नो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बट यू हैव टू प्रिपेयर इफ देयर इज एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, then where that particular income, excess income, will be utilized. That is the job of the secretary. That is to be get it approved in the MC meeting first. Then budget, you will have to prepare the budget in MC meeting. First MC meeting will approve all these things, and then it is to be approved by the annual general body meeting. So budget is to be prepared. Then appointment of auditor. एक ऑडिटर मैक्सिमम 3 साल के लिए ऑडिट कर सकता है. उसको फिर ब्रेक दे दो, अगेन उसको देगा तो नो इश्यूज, बट कंटिन्यूसली इफ यू क्रॉस द बाउंड्री 3 years देयर विल बी प्रॉब्लम. सो एक ध्यान में रखो कि एक ऑडिटर को 3 साल ही ऑडिट करो, उसको ब्रेक दे दो. 4 years से कुछ इश्यूज नहीं है. दैट इज एज पर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट सेक्शन 79. दूसरा, एक ऑडिटर मस्ट बी फ्रॉम द पैनल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र. ऑडिटर है, ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, बट नॉट इन पैनल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, ही कैन नॉट डू ऑडिट. ऑडिटर ये गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का जो पैनल है वहाँ का ही चाहिए. चार्टर्ड अकाउंटेंट है बट वो पैनल पे है और वो ऑडिट नहीं कर सकता है. ये एक ध्यान में देने का, ध्यान में रखने का. ओके, देन उसका भी ऑडिटर को प्रायर टू दैट जस्ट यू हैव टू डिस्कस टू द ऑडिटर एंड उसको बोलने का कि मैं आपको अपॉइंट कर रहा हूँ, हमारी सोसाइटी आपको एज अ ऑडिटर करके अपॉइंट करते हैं दिस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर, ये उसको बोलने का. एंड देन आप उसको अपॉइंटमेंट लेटर देने का, देन ही विल गिव द कंसेंट लेटर. ओके, बजट इज टू बी अप्रूव्ड. कौन से ये सम ऑफ द थिंग्स इज टू बी सबमिटेड टू द रजिस्ट्रार. तो बजट भी आपको आपके एमसी मीटिंग में फर्स्ट अप्रूव करने का है, और अप्रूव कर. दैट वन मोर थिंग विच वी विल हैव टू दी एन्युअल रिपोर्ट्स. एन्युअल रिपोर्ट्स म्हणजे वार्षिक अहवाल मराठीमध्ये बोलतात. वार्षिक अहवाल जो ॲक्टिव्हिटीज आपने जो किया है वो आपको फर्स्ट एमसी में अप्रूव करेंगे, देन एनुअल जनरल बॉडी में दैट रिपोर्ट इज टू बी सबमिटेड टू द रजिस्ट्रार. मुझे आप व्हाट्सअप करेंगे तो क्या क्या रिपोर्ट्स आपको रजिस्ट्रार को सबमिट करने का, विल फॉरवर्ड यू. My number is 9819306967. If you have any doubt, just to send me the WhatsApp message. I will forward you with regards to audit itself. इसलिए ऑडिट के बारे में होने के बाद then next step is annual general body meeting. Annual general body meeting ये कौन से भी हालत में 30 सितंबर के पहले होने चाहिए. अभी एक्सटेंशन मिला. सपोज आपका स्पेसिफिक सोसाइटी इफ दे अप्रोच टू द रजिस्ट्रार for the extension of the date, no, you will not get any extension. So कौन से भी हालत में एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग ये 30 सितंबर के पहला होना चाहिए. ओके, ये दिस ईयर एक्सटेंशन दिया था बिकॉज ऑफ द फ्लड एटसेट्रा, हेवी रेन दिया था. दैट पावर इज विथ ओनली गवर्नमेंट. यू विल नॉट गेट एनी एक्सटेंशन 30 सितंबर. देन नोटिस. Date of notice and date of meeting is very important. Why it is important? Because you will have to give the 14 clear days notice. 14 clear days. What is the meaning of clear days? 14 clear days. 14 clear days means excluding date of notice and date of meeting, which का 14 days होना चाहिए. इसका मतलब ये 16 clear days होते हैं. See, as per bylaws number 99, आप जब भी नोटिस बनाते हैं
So it is to be displayed on the notice board, it is to be circulated to each and every member of the society, and one copy is to be given to the registrar and one is to be फेडरेशन. जब भी मेरे पास ये नोटिस आता है फेडरेशन में, एंड इट इज़ अ मैंडेटरी एज पर बायलॉज नंबर 99, one copy of the notice must be given to the registrar, one is the federation. It is a mandatory as per bylaws number 99. उसमें क्या होता है कि बहुत टाइम जब भी मेरे पास नोटिस आते हैं और मैं देखता हूँ नोटिस, 1 तारीख का डेट ऑफ नोटिस है एंड 14th को मीटिंग है, इनवैलिड मीटिंग है, क्लियर डेज नहीं होता है. क्लियर डेज में एक्सक्लूडिंग डेट ऑफ नोटिस एंड डेट ऑफ मीटिंग, ये दोनों के बीच का जो है दैट इज अ क्लियर डेज. ये ध्यान में रखने का है, अदरवाइज इनवैलिड मीटिंग होगी. ओके, ये नोटिस सबसे पहला देने की है. उसके बाद में एजेंडा नंबर 1, टू रीड एंड कंफर्म द मिनट्स ऑफ द प्रीवियस मीटिंग. सेकंड, टू अप्रूव द ऑडिटेड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट. थर्ड, to approve the audit rectification report. Fourth, to approve the budget. Fifth, to approve the annual activities जो है annual reports. ये these are some of the mandate. To appoint the auditor. 6, these are the agenda. There must be the agenda. Some of the which I have just explained. There must be the agenda. अदरवाइज इट विल बी. एक सोसाइटी की मैं बताता हूँ, वाशी की सोसाइटी है, वहाँ टू अप्रूव द बजट दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाज नॉट इन द एजेंडा, एंड वन प्रॉब्लम क्रिएटर ही अप्रोच टू द रीजनल सेड दिस इज नॉट दिस पर्टिकुलर आइटम इज नॉट इन द एजेंडा. ओके, एंड since it was not in the agenda, that particular problem creator says now you initiate actions as per the bylaws. Because they have to follow the bylaws which they have not followed. But other things बाकी जब भी वो मेंटेनेंस इंक्रीज कर रहा था उसमें सब कुछ डिटेल्स लिखा है, बट खाली एजेंडा में नहीं था कि टू अप्रूव दी व्हाट इज इट, दिस इज बजट, ये नहीं था. इसलिए फिर रजिस्ट्रार ने एक्शन लिया. जब भी सपोज व्हेन द रजिस्ट्रार टेक्स द एक्शन अंडर सेक्शन 78, he sends the show cause notice to the federation. Then we said this is a minor mistake. There need not to initiate any actions on the society. It is a minor because everything has been mentioned in the other agenda. Only specific agenda was not there. तो इतना एक ध्यान में रखने का कि आपका जो एजेंडा है उसमें ये थिंग्स आना ही चाहिए. ओके, देन एनी फाइनेंशियल मैटर और द पॉलिसी डिसीजन देयर मस्ट बी एजेंडा. एनी अदर मैटर विद द परमिशन ऑफ चेयर में ये नहीं चलेगा. फाइनेंशियल मैटर और द पॉलिसी डिसीजन है तो वहाँ एजेंडा होना चाहिए, राइट. देन नेक्स्ट जो सेंटेंस रहेगा उसमें लिखने का इफ देयर इज नो कोरम मीटिंग विल बी एडजॉर्न फॉर हाफ एन आवर. देन व्हाट इज अ कोरम. गणसंख्या नसली तर ही सभा अर्ध्या तासासाठी तहकूब केली जाईल. व्हाट इज अ कोरम. Quorum is 2/3 or 20, whichever is less, is the quorum. If you write if there is no quorum, the meeting will be adjourned for half an hour. Thereafter quorum is not required. आपकी अगर 11 बजे की मीटिंग है एंड 11 बजे आपका 2/3 में 100 होएगा तो 67 और 20 मीन्स 20 अगर मेंबर्स नहीं है, 100 अगर फ्लैट्स हैं तो 67 चाहिए और 20. ये अगर कोरम नहीं है 11 बजे एंड आपने अगर नोट लिखा इफ देर इज नो कोरम, हा वार्षिक सर्वसाधारण सभा जी असते त्याचा कोरम 2/3 और 20 विचेवर इज लेस असं आहे. म्हणजे आणि हे जर तुम्ही तिकडे लिहिलं इफ देर इज नो कोरम मीटिंग विल बी ॲडजर्न फॉर अपरंट देअर कोरम इज लॉय. 11ची सभा आहे, 11 वाजता जर तुमचा कोरम नसेल, 100 असेल तर कोरम 2/3 म्हणजे 67 किंवा 20 जर 11 वाजता नसतील तर ती मीटिंग ॲडजॉर्न केली जाईल. पण समजा तुम्ही जर तिथे लिहिलं इफ देर इज नो कोरम मीटिंग विल बी ॲट, सपोज इफ देर इज नॉट प्रेझेंट, इफ देर इज 100 मेंबर्स देन 67, 2/3 मीन्स 2/3 ऑफ द 100 इज 67 और 20, 20 नॉट परसेंट 20 विच एवर इज लिस. ओके, आपका जो मीटिंग 11 o'clock की है एंड वहाँ सपोज 100 मेंबर्स है, 20 अगर प्रेजेंट नहीं है एंड इफ यू आर if there is the particular clause in the agenda, if there is no quorum, meeting will be adjourned for half an hour. Thereafter quorum is not required. तो फिर क्या होगा, फिर
11 की मीटिंग है, 11 बजे कोरम नहीं है एंड ये क्लॉज अपने लिखा है, तो 4 मिनट 11:30 11 बजे हमारे चेयरमैन साहब जस्ट खड़े रह के बोलेंगे ना वो कोरम नहीं है, ये मीटिंग हम लोग एडजॉर्न करेगा एंड उसके बाद में 11:30 के बाद 5 मेंबर हो गए, 4 मेंबर हो गए, तो भी दैट विल बी द वैलिड मीटिंग। ओके, ये एक लिख लेगा। सेकंड नोट आपको लिखने का है, नो प्रॉक्सी एंड पावर ऑफ अटर्नी होल्डर इज अलाउड टू अटेंड द मीटिंग। No proxy or power of attorney holder is allowed to attend. Then who will attend the meeting? Suppose original एक member है, no proxy and power of attorney holder is allowed to attend the meeting. Then who will attend? Flat single है, वो रहेगा। If the flat is in the joint name अगर है, तो first is absent, then second can attend. Now new provision which has been come in 2019, section 154B1 into bracket 18 into bracket A into bracket, that is associate member can attend the meeting. See, as far as this, that particular section is concerned, 12 members can be the associate member. It's a husband, wife, son, daughter, nephew, niece, father, mother. It's a 12 family definitions which they have given. They can attend the meeting. Then what is the process? How they will attend the meeting? The process is, first they will submit the form number 5. They will submit the form and managing committee will approve that particular form. Along with form they will give you the 100 rupees and managing committee will approve the form and enter the name of the associate member in only I and J register. Associate member का खाली I and J register में एंट्री होगा। His name of the associate member will not appear in share certificate and share register. Clear? अभी वो associate member कभी तक रह सकता है, जब तक ओरिजिनल मेंबर की मर्जी है, उसको लगता है कि इनको एसोसिएट मेंबर करें, ही विल बी एज अ एसोसिएट मेंबर। ओरिजिनल मेंबर को अगर लगता है कि इसको निकाल दो, ही विल गिव द लेटर एंड उसको निकाल सकते हैं। ओरिजिनल मेंबर की डेथ हो गई, ऑटोमेटिकली बाहर। क्लियर? एसोसिएट मेंबर्स कैन अटेंड द मीटिंग एंड ही कैन कॉन्टेस्ट द इलेक्शन, ही कैन बी द चेयरमैन एंड सेक्रेटरी ऑफ योर सोसाइटी। सेकंड ओनर कैन अटेंड द मीटिंग, सपोज नो, देन तो हमारा जो क्वेश्चन था कि देन मीटिंग कौन अटेंड करते हैं, दैट इज वन, दैट पर्सन्स कैन बी अटेंड द मीटिंग। मीटिंग होने के बाद आपको क्या क्या करना पड़ता है? जब ये एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग और एनी स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग अगर होने के बाद, what first job which secretary has to do it within 1 month from the date of AGM, the secretary has to issue the appointment letter and the auditor will give the consent letter and both the letters to be submitted to the registrar. अगर आप ये नहीं करेगा तो देन यू मिस द बस, देन रजिस्टर विल अपॉइंट द ऑडिटर। थाना रजिस्ट्रार ने 5000 सोसाइटी के ऊपर एक्शंस ली थी कि उसने अपॉइंटमेंट नहीं किया, और किया होगा तो भी सबमिट नहीं किया अपॉइंटमेंट लेटर एंड कंसेंट लेटर, तो 5000 सोसाइटी के लिए एक्शंस ली थी थाना रजिस्ट्रार ने। तो ये ध्यान में रखने का, ये फर्स्ट जॉब करने का है। देन सेकंड जॉब आपको ऑडिटर के पास जाके ऑडिट रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट, ये ट्रिप्लिकेट में रहता है, ओ फॉर्म में वो रिपोर्ट आपको लेके जाने का है, उसको देने का एंड ही विल साइन और ही विल पुट सम रिमार्क्स और ही विल साइन, देन ही विल कीप 1 कॉपी विद हिम एंड 2 कॉपीज आपको वापस दे देगा। आपको वो कॉपी वापस आने के बाद एक आपके पास रहेगा एंड एक रजिस्टर्स को पास आपको सबमिट करने का है, कभी करने का है within 3 months from date of audit, not date of AGM. Within 3 months from date of audit, society has to submit audit rectification report to the registrar and auditor. ये AGM में नहीं है, ओके। देन बाकी के जो रिपोर्ट है वो भी आपको रजिस्ट्रार के पास सबमिट करने के हैं। देन मिनट्स ऑफ द मीटिंग जो है within 3 months from the date of AGM or the general body meeting, the managing committee
has to approve draft minutes of the general body. Within 3 months from the date of general body meeting, managing committee has to approve draft minutes of the AGM. Once it is approved, then what is next? Once it is approved, within 15 days from date of approval, it is to be submitted. It is to be circulated to each and every member of the society and to be displayed on the notice board. 15 दिवसाच्या आत तुम्हाला तुमचे जे ड्राफ्ट्स मिळतात जो आहेत ते तुम्हाला सर्क्युलेट करायचं एकदा अप्रूव्ह झाल्यानंतर. आणि देन व्हॉट इज द नेक्स्ट? सपोज वन्स यू आर सर्क्युलेटेड, देन विदिन 15 days from date of the circulation, within 15 days from the date of it, suppose if member is having any objection on that particular the draft minutes, he can raise the objection within 15 days. 16 days हो गए थे नहीं. Okay. Second thing, 4th May 2023 there was one circular. 4th May 2023 the government of Maharashtra issued one circular. That circular says if the member is absent in that any particular meeting, he cannot raise any objection. Suppose if you want to raise any objection on that particular meeting where he was absent, he has to go under section 91 to the cooperative court. Clear? This circular, if you want a circular, just send me the WhatsApp message. I will forward you the circular. Clear? ये AGM हो गया. उसके बाद में suppose if you receive any objections from the members, then what you will do? The next MC meeting में, managing committee meeting में, आपको क्या करने का? Next MC meeting, you will discuss. The managing committee will discuss about the objection they raised was the members. Okay. वो डिस्कस करने के बाद अगर मैनेजिंग कमेटी को लगता है कि मेंबर इज राइट, देन दे विल मेक, यस, सेक्रेटरी विल प्रिपेयर द ड्राफ्ट मिनट्स. इट इज टू बी अप्रूव्ड इन द एमसी मीटिंग. वंस इट इज अप्रूव्ड विदिन 15 days from date of approval of the draft minute, it is to be circulated to each and every member of the society. Next AGM it will be approved. Next AGM it will be approved. Here only draft minutes is to be circulated. उसके बाद में ये जो अप्रूव होने के बाद सपोज आपको लगता है कुछ ऑब्जेक्शंस आ गए, इफ यू फील मेंबर इज राइट, जस्ट यू विल मेक अ नेसेसरी करेक्शन इन द ड्राफ्ट मिनट. इफ यू फील दैट मेंबर इज रॉन्ग, देन यू विल नोट डाउन सच अ थिंग्स इन योर एमसी मिनट्स बुक. क्लियर? This is as far as the annual general body meeting is concerned. One more meeting, that is a special general body meeting, which managing committee can call at any time. Special general body meeting. Here, as far as the special general body is concerned, 5 clear days notice is to be given to the member of the society. AGM भी ऐसा है कि वहाँ 14 क्लियर डेज देने का है, बट यहाँ आपको 5 क्लियर डेज नोटिस देने के है. स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग, राइट? बाकी सब प्रोसीजर सेम है अप टू द मिनिट्स. और प्रोसीजर सेम. 1 तारीख को मीटिंग आहे, मराठीत इंग्लिश मराठीत बोलू. 1 तारखेला मीटिंग आहे तुमची. आता 1 तारखेनंतर मधले 14 वाचायचे. पहिलं पकडलं आणि हे 14 15 झाले. डेट में आता है इमीडिएटली. सपोज सेक्रेटरी को अगर नॉमिनेशन फॉर्म मिलता है तो इमीडिएटली सेक्रेटरी विल गिव द एक्नॉलेजमेंट. बट prior to that, he must ensure that there must be 2 witness. अगर विटनेस, अभी एक केस आ गई थी कि एक ही विटनेस था, बोला नहीं 2 विटनेस चाहिए उसके लिए. 2 विटनेस उसने देखो एंड एक एक्नॉलेजमेंट दे दो. नेक्स्ट जो मैनेजिंग कमेटी मीटिंग होगी वहाँ वो डिस्कशंस होगा. वहाँ डिस्कशंस हो गए एंड वहाँ डिस्कशंस होने के बाद विदिन 7 days from date of discussions or date of managing committee, secretary has to enter the name of the nominee in nomination register. 7 days. Once it is entered, then immediately वो जो नॉमिनेशन जो 2 कॉपी उसके पास रहती है, वहाँ कौन से मीटिंग में वो एंटर किया, कौन से मीटिंग में वो डिस्कस किया एंड कौन से सीरियल नंबर में एंटर किया, वो उसमें लिखने का. क्लियर? फिर और एक कॉपी उसको दी जाएगी एंड जो उसके पास कॉपी रहती है वहाँ एक्नॉलेजमेंट रहेगी तो उसको रिसीव करते. एक इमिजिएटली द्यायचे तुम्हाला, एक कॉपी इमिजिएटली द्यायचे सही करून. दुसऱ्या आता 2 कॉप्या असतात. मॅनेजिंग कमिटी मीटिंग झाली त्याच्यावरती डेट लिहिली तुम्ही,
ती डेट लिहिल्यानंतर मग दुसरी कॉपी द्यायची आणि तिसऱ्या कॉपीवर सही घ्यायची. नाउ वी डिस्कस अबाउट द ट्रांसफर. फर्स्ट ट्रांसफर बेस्ड ऑन द नॉमिनेशन. ओरिजिनल फ्लैट ओनर्स के की डेथ हो गई तो जो नॉमिनी है उसके नाम पे फ्लैट ट्रांसफर हो गया. बट वो जो नॉमिनी जो मेंबर रहता है, ही इज ओनली प्रोविजनल मेंबर. एज पर सेक्शन 154B13, nominee is only provisional member. If you read the notes of the bylaws number 34, you will come to know that nominee is only trustee. It is very much clear. Nominee is only trustee. एक बॉम्बे की केस है, वहाँ क्या होगा था, बॉम्बे हाई कोर्ट की केस है वो, एंड अंधेरी की कुछ केस का. एक नॉमिनी बेस्ड ऑन द नॉमिनेशन, एक के नाम पे फ्लैट था, उसने नॉमिनी उसके एकदम डिस्टेंस रिलेटिव को किया था, एंड सोसाइटी नॉमिनेशन किया. उसने ऑब्जेक्शन किया कि ये डिस्टेंस रिलेटिव है, मैं उसका सगा भाई हूँ, एकदम क्लोज रिलेटिव मेरे नाम पे नहीं है, मेरे नाम पे नहीं है. तो फिर बॉम्बे हाईकोर्ट के मैटर चला गया. बॉम्बे हाईकोर्ट बोला नहीं, सेक्शन 154B13, प्रीवियसली इट वाज सेक्शन 30, नाउ इट इज सेक्शन 154B13. सोसाइटी को डायरेक्शन दे दिया कि उसको नॉमिनी के नाम पर प्रोविजनल मेंबरशिप दे दो. One more case which we will discuss, that is Indrani Hui. As far as the West Bengal Cooperative Society Act is concerned, आप नॉमिनी खाली आपके फैमिली मेंबर्स को ही कर सकते हैं. As far as the महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट इज कंसर्न, आप नॉमिनी किसको भी कर सकते हैं. क्लियर? वेस्ट बंगाल कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट ओनली. वहाँ क्या था, हस्बैंड वाइफ में डिस्प्यूट थी. हस्बैंड ने अपने लड़की को नॉमिनी किया था. वेस्ट बंगाल, आई एम टॉकिंग अबाउट द वेस्ट बंगाल, नॉट महाराष्ट्र में भी एक केस हो गई थी बाद में. उसके बाद में बॉम्बे हाईकोर्ट में मैटर आ गया था. हस्बैंड ने क्या किया कि एक अपने लड़की को इंद्राणी वही उसको नॉमिनी किया था. उसके बाद में ओरिजिनल मेंबर की डेथ होगी. शी अप्रोच टू द सोसाइटी. सोसाइटी ने उसको प्रोविजनल मेंबरशिप दे दिया. Mother and brother took objections. They approached to the society. Society refused it. Then they went to the register of the cooperative society. Register of cooperative society is given directions to the society to make वो जो ब्रदर है उसको करो. उसका ऐसा कहना था कि ये जो उसकी शादी होने के बाद she doesn't come as per the definition of the family, वो बाहर गई है, ऐसा उनका कहना था. But this case went up to the Supreme Court. पर in the meantime मम्मी भी डेथ हो गई, तो मदर एंड फादर दोनों की डेथ हो गई. ब्रदर एंड सिस्टर अभी झगड़े कर रहे हैं प्रॉपर्टी के ऊपर. देन बॉम्बे सुप्रीम कोर्ट बोला कि आप यू गो टू द एप्रोप्रिएट, ऑब्टेन्स द हेयरशिप सर्टिफिकेट्स एंड सेटल योर इश्यूज इफ यू डिजायर. ओके, दिस इज अ बेस्ड ऑन नॉमिनेशन. द फर्स्ट की नॉमिनी की डेथ हुई. देन सपोज अगर ए के नाम पे फ्लैट है, उसने नॉमिनी किसको किया नहीं है. ओके, देन बायलॉज नंबर 35, यू रीड द बायलॉज नंबर 35. देयर इज अ सेट, इट इज अवेलेबल इन द फेडरेशन ऑफिस. जो उसको मेंबरशिप दी जाएगी वो प्रोविजनल मेंबरशिप. दैट मेंबर कैन नॉट सेल द फ्लैट. ओके, शेयर सर्टिफिकेट जो आपने बोला ना, पहला क्या था, पहला 50 रुपीज़ के 5 शेयर थे. 2014 बायलॉज में 50 के 10 किए. बट अभी शायद से आई मीन द बायलॉज अमेंडमेंट कमेटी, काफ़ी चेंजेस आने वाले हैं अभी काफ़ी. तो अभी कुछ करो मत, जब भी नया रूल्स आएंगे, बायलॉज आएंगे, उसके बारे में, उसके बाद में सब कुछ करो. क्लियर? तो फर्स्ट ट्रांसफर विच वी हैव सीन बेस्ड ऑन द नॉमिनेशन, सोसाइटी कैन नॉट रिफ्यूज. देयर इज अ बॉम्बे हाई कोर्ट जजमेंट, उसको मेंबरशिप देने की है. सेकंड, इफ देयर इज नो नॉमिनी, बायलॉज नंबर 35, ट्रांसफर टू हियर. आपका सेल पे ट्रांसफर होते हैं. थर्ड जो ट्रांसफर है दैट इज बेस्ड ऑन द सेल एग्रीमेंट, सेल डीड. ओके, सेल डीड में जब भी अपने मैनेजिंग कमेटी में सेक्रेटरी के पास जब भी फॉर्म आता है, तो सेक्रेटरी मस्ट इंश्योर कि सब फॉर्म है, फॉर्म नंबर 28(1), 28(2), फॉर्म नंबर 3, 21, ये सब फॉर्म सेक्रेटरी ने चेक करने का. उसके साथ सेल डीड आएगा, इंडेक्स 2 आएगा, इट मस्ट बी रजिस्टर्ड, एंड इंडेक्स 2 आएगा. ये सब देने के बाद ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट्स आएंगे. 100 रुपीज़ एंट्रेंस फी, 500 रुपीज़ ट्रांसफर चार्जेस, मैक्सिमम 25,000 ट्रांसफर प्रीमियम.
You cannot stick more than the 25,000. If A grade municipality उसका रहेगा 20,000, B grade का 15,000 and C grade का 5,000, इतना ही ले सकते हैं. जनरल बॉडी इज द सुप्रीम, बट सपोज अनऑथराइज्ड पार्किंग है तो जनरल बॉडी बोलेगा कि इसके क्लास तोड़ो का अनऑथराइज्ड पार्किंग कर रहे हैं. ये जो 25,000 ये मैटर अप टू हाई कोर्ट गया था. यू कैन नॉट टेक मोर देन 25,000. एक बॉम्बे हाई कोर्ट की जजमेंट है, एक सोसाइटी पुणे की सोसाइटी है, उसने क्या किया था 5 टाइम्स ऑफ सेल वैल्यू ट्रांसफर प्रीमियम 15 लाख आता था वो. 5 टाइम्स मैटर बॉम्बे हाई कोर्ट में गया. देन बॉम्बे हाई कोर्ट ने सर्कुलर देखा कि उसमें 25,000 के ऊपर दैट इज ऑर्डर आप नहीं ले सकते. देन उसने सोसाइटी रिजोल्यूशन पास विद मेजॉरिटी ऑफ वोट. इसलिए दो जनरल बॉडी इज द सुप्रीम, जनरल बॉडी हैज टू टेक डिसीजन और द पास द रेजोल्यूशन विद इन फ्रेमवर्क ऑफ एक्ट रूल्स एंड बायलॉज. तो ये पर्टिकुलर जो है इसमें जो पर्टिकुलर यू कैन नॉट टेक मोर देन 25,000. तो फिर ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट बोला कि वैसे आप नहीं ले सकते. इसलिए जनरल बॉडी अगर सुप्रीम होगी, एक फर्स्ट क्लास एक और एक जजमेंट है, जनरल बॉडी हैज टेकन वन डिसीजन 70 रुपीज पर फ्लैट पर मंथ. 70 रुपीज पर फ्लैट पर मंथ. सोसाइटी इट इज अ प्रॉपर ये एजेंडा था, कल्चरल एक्टिविटीज फंड करके लेने का प्रॉपर एजेंडा. 70 रुपीज पर फ्लैट पर मंथ एकदम प्रॉपर एजेंडा था. इट वॉज पास बाय मेजोरिटी ऑफ द डोमिनो के केस है ये. Then suppose if you want to take any objection with regard to the resolutions of the general body meeting, then as per bylaws number 174, you will have to go to the cooperative court under section 91. Simple. One lady approached to the cooperative court, Thana cooperative court. Thana cooperative says yes, you can take. She challenged the order of the Thana cooperative court to the appellate court. Appellate court also says yes, you can take the 70 rupees per flat per month as a cultural activities fund. That lady was not happy. She approached to the Bombay High Court. देखो क्या स्टैमिना है. She approached to the Bombay High Court. Bombay High Court says, Bombay High Court इतना बहुत अच्छा तरह से डिस्कशन किया. Bombay High Court says, read subclause 27 of the section 2. Your कोऑपरेटिव सोसाइटी इज द ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन. आपको कोई जबरदस्ती नहीं ले आएगा. इट इज अ डेमोक्रेटिकली फंक्शन होने चाहिए, वॉलंटरी फॉर्मेशंस होनी चाहिए, ये बोला. उसके बाद में बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला कि यू रीड द बायलॉज नंबर 5. व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द सोसाइटी. सोसाइटी का उद्देश्य क्या है. बायलॉज नंबर 5 में लिखा है सोसाइटी का उद्देश्य क्या है. उसमें 5D में लिखा है कि to perform the cultural, educational and recreational activities. Social, cultural and recreational activities आप कर सकते हैं. सामाजिक, सांस्कृतिक आणि मनोरंजनाचा कार्यक्रम तुम्ही करू शकता. इट इज ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ द सोसायटी. हे तुमचं सोसायटीचं उद्दिष्टच आहे त्याच्यात लिहिले. त्याच्यानंतर हे 5D 5C लिहिलं आहे. 5C मध्ये टू अचीव द ऑब्जेक्ट यू कॅन रेज द फंड. जर तुम्हाला तुमचं उद्दिष्ट साध्य करायचं असेल तर तुम्हाला फंड रेज करायचं आहे विद इन फ्रेमवर्क ऍक्ट रूल्स अँड बायलॉज. देन दे सेज यू रीड बायलॉज नंबर 65Q. 65 yes, general body is supreme, general body can collect the funds. 66M says yes, general body is the supreme and you can collect the from. It should not contravene the act rules and bylaws. Act and rules च्या बायलॉच्या बाहेर जाऊन तुम्हाला काय करता येणार नाही असं जनरल. देन सुप्रीम बॉम्बे हाई कोर्ट बोला कि yes, you can collect 70 rupees per flat per month as a cultural fund. इसलिए दो जनरल बॉडी इज द सुप्रीम. General body has to take a decision within framework of act rules and bylaws. तो ये जो ट्रांसफर का जो है ट्रांसफर चार्जेस, ये ट्रांसफर चार्जेस 25,000 के ऊपर यू कैनॉट टेक द ट्रांसफर चार्जेस, कैनॉट टेक मोर देन द 20. ओके. तो ये एज फार एज द सेल डीड इज कंसर्न ये सब होना चाहिए. कोई भी 25,000 को ऊपर नहीं देता. देन नेक्स्ट जो है
ओके, ये सेल डीड। देन नेक्स्ट गिफ्ट डीड। गिफ्ट डीड इमीडिएटली ट्रांसफर होती है, बट इट मस्ट बी द रजिस्टर। सेक्शन 154B12 says all transfer document must be the register. Section 154B12 says all transfer must be the register. तो सेल डीड जो है, गिफ्ट डीड जो है, और रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड होनी चाहिए। वंस इट इज रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड, तो इमीडिएटली ट्रांसफर हो सकते हैं। एनी ट्रांसफर विद इन अ फैमिली डेफिनेशन, बायलॉज नंबर 3 में फैमिली का डेफिनेशन दिया है। क्या फैमिली डेफिनेशन है? वो कौन सा भी ट्रांसफर अगर विद इन फैमिली मेंबर्स है, तो यू कैन नॉट टेक ट्रांसफर प्रीमियम, यू हैव टू टेक ओनली 600 रुपीज। क्लियर? एनी ट्रांसफर, फैमिली का डेफिनेशन बायलॉज नंबर 3 में दिया है, तो एनी ट्रांसफर विद इन फैमिली मेंबर्स, ओके, यू कैन नॉट टेक द ट्रांसफर प्रीमियम, you have to take only entrance charges, entrance fees and transfer charges. Clear? ये फोर्थ ट्रांसफर हो गया। एंड फिफ्थ ट्रांसफर जो है, फिफ्थ ट्रांसफर इज विल से ट्रांसफर होता है। ओके, बट विल की जब ट्रांसफर होता है तो उसका प्रोबेट ऑब्टेन करना पड़ता है। विल के सपोज इफ ट्रांसफर इज विद इन, सपोज विल अगर किया है, किसके भी नाम पे विल करते हैं, एज पर इंडियन सेक्शन 1925 will need not be registered, but it is better to be registered, because if it is registered, तो दो विटनेस है, वो सिग्नेचर रजिस्टर के सामने करता है, इट बिकम्स अ पब्लिक डोमेन। इसलिए विल जो है वो आप रजिस्टर करो। डेथ होने के बाद जो बेनिफिशियरी है, अगर डेथ होती है तो जो बेनिफिशियरी है, दैट बेनिफिशियरी विल ऑब्टेन द प्रोबेट फ्रॉम द कॉम्प्यूटेड कोड, एंड देन बेस्ड ऑन द प्रोबेट यू कैन ट्रांसफर द विल। Clear? Then next transfer, heirship certificate और succession certificate. Next transfer, heirship certificate और succession certificate के ऊपर आप ट्रांसफर कर सकते हैं। What is the procedure? जब भी आपके पास heirship certificate आता है, if you go to obtain the heirship certificate or the probate, maximum जो court fee stamp है वो 75,000, मैक्सिमम कोर्ट फी स्टैम्प 75,000 है, वो कोर्ट में भरना पड़ता है। विडो के लिए 10,000 है, वो अभी नया अमेंडमेंट आ गया है। ओके, तो बेस्ड ऑन द विल यू कैन ट्रांसफर। किससे भी ले लो, बट आउटगोइंग मेंबर्स के नाम पे रिसीट दे दो, क्योंकि एज पर द कंसेप्ट ऑफ म्यूचुअलिटी, व्हाट इज द कंसेप्ट? सेक्शन 83 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, कंसेप्ट ऑफ म्यूचुअलिटी, अगर कुछ अमाउंट, इफ यू रिसीव एनी अमाउंट, इट इज अ टैक्स फ्री, इट इज अ टैक्स फ्री, तो उसको दे दो, किसके भी आने के, बट उससे नाम पे दे दो। बट देयर इज वन सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है कि अगर वो इनकमिंग मेंबर नहीं देगा तो प्रॉब्लम है, बट डोंट टेक चांस, उसके लिए दे दो। तो फिर कंसेप्ट ऑफ म्यूचुअलिटी से जो टैक्स फ्री रहता है। एंड कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना, इट इज अ मैंडेटरी। क्लियर? तो वो ज़्यादा ध्यान में रखो। उसके बाद में वो डिफॉल्टर हो गया। सी सेक्शन 154B7 इज द वेरी मच क्लियर। डिफॉल्टर मेंबर को मेंबर्स कर नहीं सकता है। डिफॉल्टर जो मेंबर है उसको करने, बट वो सपोज डिफॉल्टर है, देयर इज अ प्रोसेस ना, सेक्शन 154B29 यू कैन इनिशिएट द एक्शन, रिकवरी प्रोसेस। फिर ट्रांसफर नहीं होगा। उसमें लिखा है सेक्शन 154B7 में लिखा है मेंबर इज द डिफॉल्टर, देन उसका ट्रांसफर नहीं होगा। तो ये जो ट्रांसफर है विल, अभी एक नया प्रोविजन आया है सेक्शन 154B29 में। व्हाट इज दैट प्रोविजन? फैमिली अरेंजमेंट। फैमिली अरेंजमेंट, हमारे फेडरेशन ने फैमिली अरेंजमेंट का ड्राफ्ट बना के रेडी रखा है। उसके साथ 2 पेपर नोटिस देने की है, दैट आल्सो वी आर केप्ट रेडी। शायद दिसंबर के पहले रूल्स अप्रूव हो गए। उसके बाद में एक इंडिमिटी बॉन्ड देने का, दैट आल्सो वी केप्ट रेडी। एक दफे फैमिली अरेंजमेंट तो जस्ट फैमिली विल सिट टुगेदर एंड दे विल मेक सम अरेंजमेंट, एंड दैट फैमिली अरेंजमेंट दे विल गो टू द रजिस्टर ऑफ एश्योरेंस एंड रजिस्टर द फैमिली अरेंजमेंट, देन सोसाइटी वो ट्रांसफर कर सकते हैं। बट ये प्रोसीजर है, उसमें Z4 नंबर का भी फॉर्म है, नया है ये, अभी तक अप्रूव हुआ नहीं। अप्रूव होने के बाद पूरे नवी मुंबई में जो हमारे मेंबर्स है सबको ऑटोमेटिकली जाएगा ये।
कहाँ जाने की जरूरत है, तो फैमिली अरेंजमेंट में ट्रांसफ़र होती है, इतना ध्यान में रखने का। ओके, सो दीज आर द 6 टाइप्स की जो ट्रांसफ़र है ये आपके ट्रांसफ़र हो सकते हैं। लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट, एज पर सेक्शन 55 ऑफ द महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट, लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट मस्ट बी रजिस्टर्ड। As per section 55 of the Maharashtra Rent Control Act, लीव एंड लाइसेंस मस्ट बी रजिस्टर्ड। ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है रजिस्टर करना और ना करना, किसकी? इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ओनर। सपोज वो नहीं करता है, देन व्हाट इज द पनिशमेंट? उसको 3 month जेल, 5,000 रुपीज फाइन और बोथ। ओनर को 3 month जेल, 5 सेक्शन 55 ऑफ द महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट, 3 months जेल और 5,000 रुपीज और बोथ, ये है। तो जब भी लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट आपके पास आता है अगर रजिस्टर नहीं है, एंड सेकंड एडवांटेज इज देयर, मैक्सिमम 5 years के लिए लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट करते हैं, उसको एविक्शंस करना ईजी है। कोकण भवन में एक अथॉरिटी बैठी है, वहाँ सपोज अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएटर है, सपोज आपका जो टेनेंट प्रॉब्लम क्रिएट करता है एंड उसको एविक्शन एकदम, इफ इट इज रजिस्टर्ड देन इट इज़ वेरी इजी टू, उसको निकालना एकदम इजी है। इसलिए लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट एंड पुलिस इंटीमेशन रिपोर्ट ये लेना मैंडेटरी है। क्लियर? गव्हर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्राचं एक सर्क्युलर आहे, हाऊसिंग मॅन्युअल एक आहे, त्याच्यामध्ये ते सर्क्युलर आहे, त्याच्यात तुम्हाला बॅचलरचं त्याच्यात नाही दिलेलं, त्याच्यात तुम्हाला ह्याला देता येतं, म्हणजे तुम्हाला तुमच्या घरात जर कोणाला ठेवायचं झालं ते, पण त्याच्याकडून लीव अँड लायसन्स ॲग्रीमेंट घ्यायचं आहे। बॅचलरची एक बॉम्बे हायकोर्टाची जजमेंट आहे पुण्यातली, माझ्याकडे आहे ती जजमेंट, त्या जजमेंटप्रमाणे तुम्हाला त्यांना नाकारता येणार नाही। फक्त तो जर प्रॉब्लेम क्रिएटर, तुम्ही जर पोलीस इंटिमेशन रिपोर्ट आणला त्याच्यावर लिहिलेलं असं किती लोक राहणार ते, कळलं ना? तर बॅचलरला तुम्हाला नाकारता, अशी बॉम्बे हायकोर्टाची जजमेंट आहे, माझ्याकडे ती जजमेंट आहे, तर तसं नाही नाकारता। तुम्हाला जर त्याचा प्रॉब्लेम काय होत असेल, ते लोक जर प्रॉब्लेम क्रिएट करत आहे तर पोलीस स्टेशनला ॲज पर बायलॉज नंबर 74 कुठली कंप्लेंट कुठे करायची लिहिलेली आहे, यू कॅन गो टू द पोलीस स्टेशन आणि तुम्ही ती कंप्लेंट करू शकता। बिलकुल नाही। आणि ते तुम्ही जे ज्यावेळेस पोलीस इंटिमेशन रिपोर्ट आणतात त्याच्यात लिहिलेलं आहे किती लोक राहणार आहेत ते, नाही मग ते त्याच्यात ते लीव अँड लायसन्स मध्ये बघायचं कोण कोणाच्या नावावर ॲग्रीमेंट आहे ते, नाही ज्याच्या नावावरती असेल ना तो तिकडेच पाहिजे ना। बरोबर, 10% ऑफ द सर्व्हिस चार्ज। ऐका आपण सांगतो गव्हर्नमेंट सर्क्युलर आहे, तुम्ही 10% ऑफ सर्व्हिस चार्ज घेऊ शकता। त्या सर्क्युलरला चॅलेंज केलं गेलं बॉम्बे हायकोर्टामध्ये, आमची फेडरेशन पण नाही, पण त्याला चॅलेंज केलं होतं, स्टे दिला, थोडा वेळ स्टे दिला, त्याच्यानंतर बॉम्बे हायकोर्टाने सांगितलं जे सर्क्युलर अंडर सेक्शन 79A आलेलं आहे इट इज अ बाइंडिंग, त्याला चॅलेंज केलं गेलं सुप्रीम कोर्टामध्ये। सुप्रीम कोर्टाने पण सांगितलं, दोन्ही जजमेंट माझ्याकडे आहेत, सुप्रीम कोर्टाने पण सांगितलं, मला वाटतं मॉन्ट ब्लँक कोऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी मुंबईतली आहे ती असं वाटते, तर सुप्रीम कोर्टाने पण सांगितलं तुम्हाला 10% ऑफ सर्व्हिस चार्जच्या वर तुम्हाला NOC नॉन ऑक्युपन्सी चार्जेस घेतात, नॉन ऑक्युपन्सी चार्जेस। मी मगाशी तुम्हाला सांगितलेलं 2 रिझोल्युशन सांगितले, एक इन फेवर ऑफ दी कोऑपरेटिव्ह सोसायटी अँड अगेन्स्ट द कोऑपरेटिव्ह बायलॉज। कोऑपरेटिव्ह सोसायटी ॲक्ट सेक्शन 72 काय म्हणतं, जनरल बॉडी इज द सुप्रीम, बट जनरल बॉडीने कुठलंही डिसिजन घ्यायचं ते विदिन फ्रेमवर्क ॲक्ट, रूल्स, बायलॉज अँड गव्हर्नमेंट सर्क्युलर। जर तुमचं गव्हर्नमेंट सर्क्युलर आहे त्या सर्क्युलरमध्ये सांगितलं आहे की तुम्हाला 10% ऑफ सर्व्हिस चार्ज घ्यायचं आहे, त्या सर्क्युलरला चॅलेंज केलं गेलं बॉम्बे हायकोर्टामध्ये, बॉम्बे हायकोर्टाने सांगितलं ना 10% ऑफ द सर्व्हिस चार्ज आहे ते तुम्ही घेऊ शकता, त्याला चॅलेंज केलं सुप्रीम कोर्टामध्ये, सुप्रीम कोर्टाने पण सांगितलं तुम्ही 10%, सुप्रीम कोर्ट आपलं सगळ्यात वरचं साहेब, आपल्याला ऐकायलाच लागेल। क्लिअर? ओके।